Hello everyone. Here we are going to discuss 2024 chemistry question paper solution. Let's see the first question. Which of the following ligands can show linkage isomerism? So first, question number first, C option is correct. On adding silver nitrate solution to 1 mole of complex NiCl2, the 2 moles of AgCl form the secondary valency of the complex would be 4. Question number third, transition element form alloys easily because they have nearly same atomic sizes. Consider the following reaction. Find out the major product. So this is the tertiary. So this is the major. Tertiary free radicals are more stable. Which one of the following compound has the highest pKa value? The compound which has the lowest acidic character will have the highest pKa value. So paracresol. This, when treated with HI, gives, so it gives B, phenol and methyl iodide. Question number 7. Which of the following compound on treatment benzene sulfonyl chloride forms product insoluble in alkali? So it should be a secondary amine. Which of the following amines give carbylamine reaction? It should be a primary one. Question number 9. Night blindness is caused by A. 1% solution of solute X is isotonic with 6% solution of sucrose. Let's solve it. So this is the compound should be isotonic. Isotonic means they must have same concentration, means they must have same moles. Their moles should be equal. Number of moles of X should be equal to number of moles of sucrose. So here moles can be calculated by gram by molar mass, that we have to find out. And sucrose moles 6%, 6 gram upon 342. So when you divide 342 by 6, you will get option number B as your answer. Let's go for the next question. Question number 11. When the initial concentration of reactant is double in the reaction, the half-life period remains same. So it is a first order reaction. In first order reaction, half-life period does not depend on the concentration of cell. Which of the following is the secondary cell? That storage battery सभी घर में use हो रहा है. Let's go for the assertion reason. So question number 13. Delta H of mixing, V of mixing are 0 for non-ideal solution. This is a wrong assertion. Solute solvent interaction are not same as pure solute solute and pure solvent solvent interaction non-ideal solution. So question number 13, C option is correct. Sorry, D option is correct. D means, what is D? D is assertion A is false, but reason R is true. Question number 14. Rate of reaction increases with increase in temperature. Number of active collision increase in temperature. So option A is correct. Assertion reason are correct and correct explanation is also there. So 14th A option is correct. Question number 15. Boiling point of ethanol is higher than that of dimethyl ether. The wrong statement है. Dimethyl ether molecule are associated with hydrogen bonding. This is also a wrong statement. So first is correct, sorry. A boiling point of ethanol is higher. So option C is correct. Assertion is true, reason is false statement. Question number 16. Aniline undergo Friedel-Crafts reaction. ये बात गलत है. Aniline forms salt with AlCl3, the Lewis acid Friedel-Crafts reaction. This is correct. So option D is correct. Assertion is false and reason is true statement. Write the reaction with of glucose with hydroxylamine. So oxime will form bromine water, gluconic acid will form. Complete the balance following chemical equation. So KMnO4 when heated, it gives K2MnO4, MnO2 plus O2. And here the CO2 will be the product and Mn2 positive and water would be the product. Define molar depression constant. K F they want to ask molar depression constant. K F they want to ask you to define. So it can be defined as delta TF is equal to KF into small m. So if the molality of solution would be 1, then whatever the elevation, sorry, whatever the depression in freezing point, that will be equal to molar depression constant. And how is it related to the enthalpy of fusion? So here you need a formula. Here is the formula. KF equal to capital R M1 into TF square upon 1000 into delta fusion. So what type of deviation is shown by ethanol and acetone mixture? Give reason. What type of azeotropic mixture
So ethanol and acetone forms positive deviation. They show positive deviation from Raoult's law. What type of azeotropic mixture is formed by the deviation? The minimum boiling azeotrope will be formed in this case. Which the following pair will react faster in SN1. So you know tertiary की reactivity सबसे ज़्यादा होगी. So this is the tertiary alkyl halide because it forms more stable tertiary carbocation. Why is the dipole moment of chlorobenzene lower than that of cyclohexyl chloride? So due to resonance, chlorobenzene acquires partial double bond character, and the dipole moment is the product of charge into distance. So due to the partial double bond character, the bond length of chlorobenzene becomes slightly lesser than that of cyclohexyl chloride. 21A, in the reaction if the concentration of reactant X is triple, the rate of reaction become 27 time. What is the order of reaction? So it is third order reaction. Triple time हो रहा है और 27 time rate बढ़ रहा है. So it is a third order reaction. State the condition under which a bimolecular reaction is kinetically a first order reaction. Give an example of reaction. So they are asking about pseudo first order reaction. So hydrolysis of ester can be given in which water is taken in axis. Give the structure of ABC in the following compound. So here the compound A is CH3, CH2, CN आ जाएगा, right? Cl की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? CN. So and when you do its reduction, so it forms CH3, CH2, and this CN becomes CH2NH2. And when you treat with HNO2, they form diazonium salt, which is highly unstable, and ultimately the diazonium salt would be converted to alcohol. So you will get propane 1-ol. NO2 will undergo reduction, NH2 will be formed, diazonium salt will be formed, and after that coupling reaction is being taking place, right? So you will form the product like this. This is azobenzene. In azobenzene, when you attach OH group at para position, you will get orange color dye para hydroxy azobenzene. So this is your final product C, para hydroxy azobenzene, which is a orange color dye. Let's go for the question number 23rd. Question number 23rd says, how will you bring about the following conversions? कोई भी तीन आपको करने. Benzoic acid to benzaldehyde. So first you convert benzoic acid to benzoyl chloride, and then you do Rosenmuller reduction. Ethanol to propanone. So ethanol means CH3CHO, and you need to convert into propanone. तो आप इसका Grignard reagent से treatment करा दो, followed by hydrolysis. What you will get? You will get propanone, because formaldehyde on reaction with Grignard reagent gives propanone बोला ना, ethanol to propanone. So this is propanone आपसे पूछा हुआ इन्होंने, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो. देखो भाई, what you will do, you will first do the oxidation of ethanol, so it will be converted into ethanoic acid, and then you will treat with the calcium hydroxide, CaOH whole twice, by which you will get the calcium salt of this acid, that is CH3COO whole twice Ca. That means calcium acetate you will get. So this calcium acetate, when you heat it, this is calcium acetate, and when this calcium acetate is heated, what will happen? This CaCO, so sorry, this is CaCO3 will eliminate, CaCOO, and this one oxygen will eliminate as calcium carbonate, and CH3COCH3, that is acetone, would be formed. Next we have acetophenone to benzoic acid. So acetophenone means benzene पे you have to put COCH3 group, and you need to convert into benzoic acid. तो इसके लिए तो आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. We use strong oxidizing agent because ketone is there, right? So use alkaline KMnO4, which is very powerful oxidizing agent, which convert this compound to first COOK, that is the potassium benzoate, and when you hydrolyze it acidically, it will be transformed to
benzoic acid. It will be converted to benzoic acid. I hope it is clear to all of you. What you need to do, you need to oxidize this acetophenone with a strong oxidizing agent like alkaline KMNO4, which is a very strong oxidizing agent, by which it will be oxidized to first potassium salt of acid, and when you do its acidic hydrolysis, you will get benzoic acid. Next, we have bromobenzene to 1-phenyl ethanol. This is our bromobenzene, and we need to convert into 1-phenyl ethanol. So 1-phenyl ethanol is this compound. This is 1-phenyl. This is bond 1-phenyl ethanol. ये कंपाउंड है, देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, सब बच्चे पहचानेंगे इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन में अगर आपको याद हो ग्रिग्नार्ड एजेंट से हमने बनाया था, है ना। This is your no, this is now your secondary alcohol. Very sorry. This is your secondary alcohol, 1-phenyl ethanol. So when you treat this with the magnesium, so you will get phenyl magnesium bromide, but it is not referred as Grignard agent. Please make it a note. Alkyl magnesium halide are only known as Grignard reagent. So you will get phenyl magnesium bromide, which on treatment with acetaldehyde. If you remember, when you treat it with formaldehyde, you get primary alcohol, and when you treat with acetaldehyde followed by hydrolysis, you will get 1-phenyl ethanol. So this is about the conversions. Next, we have question number 24. Write the reaction involved in the Reimer-Timer reaction. Salicylate will form when you treat phenol with chloroform and alkali. And in Kolbe's reaction, first phenol is converted to sodium salt, and then it is treated with carbon dioxide followed by hydrolysis. It will be converted to salicylic acid. Name the reagent used in the bromination of phenol to form 2,4,6 tribromophenol. So लिक्विड ब्रोमीन से आप ट्रीट कराएंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 25% complete in 40 minutes. Calculate the value of rate constant. In what time will the reaction be 80%? तो आप क्या कर सकते हो, पहले k निकाल सकते हो। You can find out k. How would you find out k? It is 2.303. फर्स्ट ऑर्डर बोला ही है आपको। अपॉन टाइम इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स लगा दिया टाइम की जगह। log r naught by r, percentage is given, so r naught would be 100, and 25% complete means what is left, 75% is left. So by using this you will find out the value of rate constant. तो पूछा भी आपसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो वो आप फाइंड कर लेंगे, एंड द यूनिट विल बी मिनट इनवर्स। इन व्हाट टाइम द रिएक्शन वुड बी 80% कंप्लीट, तो टाइम पूछ रहे हैं सेकंड टाइम में, एंड 2.303, एंड द वैल्यू ऑफ के यू विल यूज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। दिस वैल्यू ऑफ के यू विल पुट हियर, एंड लॉग परसेंटेज की बात ही नेक्स्ट टाइम भी हो रही है, सो आर नॉट वुड बी 100, एंड व्हाट अबाउट 80% complete means how much is left, 20% would be left. So log values are given, you will use, you will find out the time. Let us go for the next question. Question number 26. Question number 26 says, what type of nucleophilic substitution occurs in hydrolysis of 2-bromobutane to form plus minus butane 2-ol? So plus minus butane 2-ol means racemic mixture is being obtained. So when racemic mixture is being obtained, that means reaction pathway would be SN1, and reason you have to give secondary है, ये आपका racemic mixture बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप बता देंगे। What happens when chlorobenzene and methyl chloride are treated with sodium metal in dry ether? So you will get biphenyl. Critic reaction is there. Conductivity of 0.2 m KCl is this much, given its molar conductivity and degree of dissociation. Two things you have to find out: molar conductivity, so lambda m or lambda c, you can write kappa into 1000 by c. Kappa is given to you, 1000 you know, and concentration is also given. So in place of kappa, conductivity is given 2.48 into 10 raised to the 48, it is into 10 raised to the power minus 2, 1000 you will put, and divide by concentration. Concentration is what? Concentration is given 0.2
capital M, and calculate the molar conductivity. This is the molar conductivity. Lambda m unit would be Siemens centimeter square per mole, and degree of dissociation. Degree of dissociation, that is they are asking alpha. So alpha would be lambda m upon lambda naught m. So for lambda m, lambda you have found out, and for lambda naught m, what you do, you need to find out lambda naught kcl by adding the molar ionic conductivities of both the ions. So this is lambda naught k positive plus lambda naught cl negative. When you add, you will get molar conductivity of kcl at infinite dilution. So this value is given 73.5, and this value is given 76.5. You will add, and now you will put the value here. You will find out your degree of dissociation, that is alpha. Question number 28. A solution is prepared by dissolving 5 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. Its vapor pressure is this much. So whenever they talk about non-volatile, that means Raoult's law for non-volatile solute formula would be used. So this is P naught minus Ps upon P naught is equal to I into mole fraction of non-volatile solute. So what you do, a solution be dissolving 5 gram of non-volatile 200 gram water, vapor pressure of itna calculate the molar mass of solute. Vapor pressure pure water is 32. So P naught is given 32, PS is given 31.84 divided by 32 and I. अब नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, कुछ आई के बारे में डाटा नहीं दे रखा है, तो इट मींस इट इज नॉट नाइदर अंडरगोइंग डिसोसिएशन नॉर अंडरगोइंग एसोसिएशन. So it would be 1. Number of moles of solute, gram by molar mass, that you have to find out. Then gram by molar mass non-volatile solute plus moles of water. मोल्स हाँ दी है आपको, 200 ग्राम वाटर इज गिवन अपॉन 80, right? So you will find out your molar mass. Your means this, the non-volatile solute molar mass. Next we have section D. The case study is there. Water essential amino acid which cannot be synthesized in our body and we need to take from external sources. What is meant by Zwitter ion of amino acids? When you dissolve amino acid in water, they dissociate into the carboxylic acid group release H positive ion, and amine group accept the H positive ion to form Zwitter ion. Whenever positive negative charges both are present on the same molecule, such species is called Zwitter ion. So you will draw it. Give one example each for fibrous protein. It is your hair protein, keratin, globular protein, albumin protein of egg or insulin. You can write what type of linkages hold the monomer, peptide linkages. What is the structural feature of characterizing and reducing sugar? It must have a free aldehyde group or अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे फ्रक्टोज है आपका, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी अगर है तो वो भी आपका रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा, जैसे कि आपका फ्रक्टोज, लेकिन सुक्रोज नहीं है. उसकी वजह आपको पता है कि जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोलाइसिस पर नहीं मिल पाता. What is the structure difference between nucleoside and nucleotide? So nucleoside में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है एंड अ पेंटोज शुगर है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या है, 3 कंपोनेंट्स हैं, अ नाइट्रोजनस बेस, अ शुगर मोइटी एंड अ फॉस्फेट यूनिट. उसका स्ट्रक्चर अगर आपको आ रहा है वो भी बना देंगे इस तरह से. We have now next case study, question number 30. Why do transition matter and the compound act as good catalyst? Simple reason, because they show variable oxidation state. If you know I negative S2O3, 2 negative example, if you know, you can also explain with the help of this. What is the cause of contraction in atomic size or lengthened contraction? Poor shielding effect produced by 4s subshell intervening electrons. Define lengthened contraction.
The regular and gradual decrease of atomic radii of lanthanides from cerium-58 to lutetium-71 is referred as lanthanide contraction. How does it affect the atomic radii of third transition series element and second transition series element? It makes almost similar atomic radii of second and third row transition series element like zirconium and hafnium. In aqueous media, which is stronger reducing agent, so Cr2 positive is a stronger reducing agent because in T2G3 it becomes half filled and extra stable. Attempt any five of the following. You have to write the IUPAC of this compound. So this is aqua cyanido bis ethane 1,2 diamine cobalt third. Why is geometrical isomer is not possible in tetrahedral complexes? Because all the positions are similar to each other. Means they have identical position one to each other. You are not able to distinguish the same orientation of ligands or the different orientation of ligand. Identical positions होती हैं. NCERT का क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज आपको लिखनी थी. Arrange the following complex and increasing order of their crystal field splitting energy. यहाँ तभी हो पाएगा जब आपको इनका CFSE के बारे में पता हो. तो यहाँ पर जो CN है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन F आपका एक वीक फील्ड. So according to CFSE, CuF6 come first, then CuNH3 host is 3 positive second, and CuCN host is 3 negative in the last. Last means it has the highest CFSE. Question number D. Write the hybridization and magnetic character of the complex NiCO whole 4 on the basis of valence bond theory. तो इसको आप अप्लाई करके देखेंगे. आई होप निकल इज ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. CO is a strong field ligand, back pairing will take place. sp3 hybridization should be there and magnetic character would be diamagnetic. I think no one electron will left when you apply it. Out of COF is 3 negative and COC2O4 3 whole thrice 3 negative, which one complex more stable? तो जहाँ पे chylation होगा that will be more stable. So here chylation will take place because the didentate ligand, chelating ligand is the oxalate ion. The high spin complex, तो ये वाला कंपाउंड हाई स्पिन होगा क्योंकि जो F है वीक फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग यहाँ नहीं हो पाएगी. What is the difference between an ambidentate and bidentate ligand? Ambidentate ligand are the special class of unidentate ligand which have two donor sites, and bidentate ligand, you know, they have two donor sites and can be used and can donate their lone pair electrons in simultaneously. Write the electronic configuration of D5 in terms of T2G Eg in an octahedral complex when delta O is greater than P. यानी कि CFSE ने पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम कर लिया है. और कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल है. यस, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है आपके पास. यानी कि इस तरह से भरेंगे. पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये वाला ऑर्डर रहेगा. ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे रहेंगे T2G के और ये 2 Eg वाले ऊपर चले गए. तो आपको यहाँ पे फर्स्ट केस में डेल्टा ओ ज्यादा है यानी कि ओवरकम कर लिया, तो पेयरिंग लोअर एनर्जी सबसेट से स्टार्ट हो जाएगी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो फर्स्ट केस आंसर वुड बी T2G5 and Eg0. Fine. And what about this? सेकेंड केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और CFSE लेस है, तो पेयरिंग लोअर एनर्जी सबशेल से स्टार्ट नहीं हो पाएगी. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो इट्स वुड बी T2G3 Eg2. आई होप सबने सही किया होगा ये. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी गो फॉर नंबर 32. Calculate EMF of the following cell at 25 degrees Celsius given that this and this. So concentration is given. You need to find out each cell and the formula would be E naught cell minus, पहले हम E naught से नहीं लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, RHE minus LHE. You need to decide here oxidation is taking place, reduction is taking place. Both the reduction potentials are given. So RHE would be CD2 positive to CD. That means minus 0.40 minus LHE. So LHE is minus 0.76. So minus minus positive would be there.
E naught cell would be positive, cell will work. Minus 0.0591 upon n. Number of electron transfer, 2 electrons are being lost here and 2 electrons are being gained here. Same 2 electrons. So transfer electrons are 2. Log oxidized upon reduced. So Zn2 positive concentration is 0.001. No stoichiometric coefficient would be there because 1 mole is there, and divided by molar concentration of Cd2 positive, no power is there. So 0.1. आई होप सबने यही लगाया होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी रहा होगा। log 10 की वैल्यू आपको दी हुई है, उसे आप कर लेंगे। राइट, Zn2 पॉजिटिव ऊपर आ गया, Cd2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन आपका लेफ्ट में चला गया, ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस्ड। राइट, let us see the second one. State Faraday's second law. If you connect two or more than two electrolytic cells in series, then the mass of a substance deposited at an electrode would be directly proportional to the equivalent weight of that substance. That is the second law. How will the pH of aqueous NaCl solution affected when it is electrolyzed? तो आपको लास्ट भी क्वेश्चन यही था भाई, जब NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो क्या क्या एस बनेंगे, NaOH बनेगा, याद है आपको, NaOH बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और लिबरेट होनी चाहिए थी क्लोरीन गैस, सॉरी ऑक्सीजन गैस, लेकिन आपको ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इसलिए ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन ना मिलके क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरीन गैस मिल जाएगा, और संग में क्या बनेगा आपका, डाई हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जो पीएच है दैट वुड बी लेस देन, सॉरी मोर देन 7, बेस बन रहा है ना आपका, NaOH बन रहा है, तो सोल्यूशन विल हैव द हायर वैल्यू more than 7, pH value would be greater than 7. So I hope it is clear to all of you. The pH would be greater than 7. Basic solution would be. Question number choice 1. Calculate the delta Rg naught and Kc for the reaction. So delta Rg naught would be minus NF E naught cell. So number of electrons are being transferred 2. And you will apply 2. So this is delta Rg naught is equal to minus 2, number of moles of electron transfer are 2, into Faraday constant 96500 coulomb, it is given to you also, multiply E naught cell, E naught would be Rhe minus Lhe. So both the reduction potentials are given. So 0.80, the species which has higher reduction potential will undergo reduction and another will have to go oxidation. So minus 0.44, Rhe minus Lhe. So Rhe is given 0.80 and Lhe is given minus 0.44. So by applying this you will get your answer joule per mole. But they are also asking Kc to you, and log Kc, देखिए इन्होंने log Kc पूछा है आपसे, they are not asking the value of Kc, so there is no need to log table or anything else, so anti log की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको। So simply you will use this formula again, delta Rg naught is equal to minus 2.303. They need to know that you know this formula or not. RT log Kc, in place of R we will put 8.314, या R की वैल्यू बस इन्होंने नहीं दी है ना, log Kc minus 2.303 RT log Kc. Temperature is given, temperature is not given, that you will use room temperature, that is 298 Kelvin. तो यहाँ पे बस इन्होंने रूम टेम्परेचर ही माना है, तो 298 केल्विन आप लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो log Kc आप सिंपली फाइंड कर लेंगे, डेल्टा Rg नॉट की वैल्यू यहाँ से आप लगा दोगे कैलकुलेट करके, ठीक है। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, दे आर, फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट एंड मोर एफिशिएंट हो गया, और आप लिख देंगे नॉन पोल्यूटेंट है, कोई पोल्यूशन हजार्डियस प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर रहा है, और एफिशिएंसी तो आपको मालूम ही है ज्यादा ही है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको कॉमन यूज में देखने को मिलते नहीं है।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के से ज्यादा पूछे, सिर्फ ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो इसलिए कि नॉन रिचार्जेबल रहते हैं प्राइमरी, और इनको ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएंगे प्राइमरी। आप देखिए आपके रिमोट में जो सेल पड़ा हुआ है कितना यूज कर पाएंगे, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने। फ्यूल सेल को जब तक आप सप्लाई देते रहेंगे फ्यूल की, तब तक इट विल कंटिन्यूस वर्किंग। सेकेंड है कि सेकेंडरी बैटरी से कैसे है, तो सेकेंडरी बैटरी से इसलिए है कि सेकेंडरी बैटरी में लेड हम यूज कर रहे हैं, हमारे घरों में आजकल लेड स्टोरेज बैटरी यूज हो रही है, और लेड स्टोरेज बैटरी में लेड बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2। तो इसको देख लेते हैं भाई, ये आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखो ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम आपके पास है, और इसमें आप कैसे कर पाते हो। इसमें 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आपकी, मैं लिख के दिखा देता हूँ इक्वेशन आपको, देखिए ऐसा आप लिख सकते हो, 2H2O gives 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2। आपको आती है इक्वेशन तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट लिख करके भी आप कर सकते हो, कैसे आयनर्स करेंगे ये बात रहेगी। तो 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के लिए बेटा, 2 मोल्स के लिए है ये, दिस इज फॉर 2 मोल्स। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ 4 मोल्स, 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 1 मोल ऑफ H2O2O2। अगर 2 मोल्स H2O से O2 बन रहा है तो कितने मोल्स लग रहे हैं, 4 मोल्स। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन कितना, 1 मोल ऑफ H2O, तो कितना आंसर हो गया, 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। हाउ मेनी फैराडे पूछा है भाई, नॉट चार्ज। फैराडे पूछा तो 2F आंसर हो जाएगा, तो आंसर वुड बी 2F। आई होप सबने ऐसे ही किया होगा, तो क्वेश्चन पेपर तो काफी आसान आपको लग रहा है, ठीक है ना। और भी 30 चीज देख लेते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फिर वही आ गया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा COOK, और फाइनली किसमें ऑक्सीडेशन आएगा, COOH में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर वुड बी, बेंजीन पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह COOH आ जाएगा। सेकेंड यू हैव योर एल्डोल कंडेंसेशन, और दिस इज अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसको आपने लिखा होगा। ब्रोमीन FeBr3, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का carboxylic group is meta directing, so Br will come at meta position and your product would be 1 2 3 3 bromo benzoic acid would be the product. Now the next question gives simple chemical test to distinguish between following pair of compound. This is acetophenone and this is propiophenone. So both are ketones. So this will give positive iodoform test. It will give negative iodoform test. Reaction भी लिखेंगे, reagents भी बताएंगे, iodine NaOH की presence में कराएंगे। Pentanal, this is aldehyde, and pentane 3-one. So one is aldehyde, one is ketone. Tolerance reagent Fehling solution is given by pentanal, and pentane 3-one will not give neither tolerance reagent nor Fehling solution test. Give reason for the following. In semi-carbazole, only one NH2 group is involved in the formation of semi-carbazole. रेजोनेंस की वजह से जो नियरेस्ट वाला NH2 ग्रुप होता है, इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, एंड रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो NH2 पार्टिसिपेट करेगा जो कार्बनिक ग्रुप से दूर वाला है। एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड एडिशन ऑफ HCN। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा एसिटाल्डिहाइड में देन द एसीटोन, तो उसका एडिशन आसानी से हो जाएगा। और इन द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर, तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो आपको बताना है, और आपको जो ऑर्डर लिखना है वो कौन सा लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पे आपको मिलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, तो आपके लिए आसान रहता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका रहेगा, 2-nitro acetic acid or ethanoic acid, and at number 2 it will come formic acid, and the acetic acid will come at the last. Name the reagent in the following reaction. ये रिएक्शन में रिएजेंट आपसे जानना चाह रहे हैं। CN केवल कन्वर्ट हो रहा है CHO में, डबल बॉन्ड इज नॉट बीइंग अल्टर, सो डाइबल H का यूज यहाँ दिख रहा है। नाइट्राइल को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, डाइबल H फॉलोड बाई hydrolysis, diisobutyl aluminium hydride. Let us go for next. Write the reaction involved in Hell-Volhard-Zelinsky reaction. लिख देंगे आप, अल्फा जो कार्बन है उस पर हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर अल्फा H है तो, है ना, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ऐसा आप कर सकते हो।
तो आई होप सबने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया है और आप सबका बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर हुआ होगा। किसी का एक आध मार्क्स अगर ऊपर नीचे कम ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जिंदगी बहुत लंबी है। ऑल द वेरी बेस्ट, आगे बहुत अच्छा करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।